हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान ऑन कोविड-19 मीन्स कोरोना वायरस डिजीज। दिस इज़ वेरी important nursing care plan for examination purpose or for file work. So you learn here this nursing care plan thoroughly. तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन कोविड-19 या कोरोना वायरस डिजीज़। फ्रेंड्स, नर्सिंग केयर प्लान बनाने से पहले हम यहाँ पर कोविड-19 का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्ट एयर कोरोना वायरस 2019 एयर कोविड-19 coronavirus COVID-19 is a disease caused by the new strain of coronavirus called severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS-CoV-2 means कोरोना वायरस डिजीज़ जो कोविड-19 से जानी जाती है, उसका मेन कॉज है कोरोना वायरस का न्यू स्ट्रेन जिसे SARS-CoV-2 या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 के नाम से जाना जाता है। दैट कैन कॉज सिम्टम्स फ्रॉम कॉमन कोल्ड टू मोर सीवियर डिजीज सच एज निमोनिया। Eventually, it may lead to death, especially those in vulnerable groups such as elderly, the very young, and people with an underlying chronic health conditions. Means जो जो कोरोना वायरस डिजीज उसका मेन सिम्टम्स कॉमन कोल्ड, सीवियर डिजीज़ जो न्यूमोनिया की तरह इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं और मेनली ये वनरेबल ग्रुप्स में पाई जाती है। मीन्स मोस्ट पेनिट्रेटिंग और मोस्ट रिस्क ग्रुप लाइक एल्डरली, वेरी यंग एंड पीपल विद अंडरलाइंग chronic health conditions here. Next, clinical manifestation: fever, dry cough, shortness of breath, sore throat, runny nose, diarrhea, fatigue, tiredness, difficulty of breathing in severe cases. तो ये important clinical features है. Means why these database we plan here the nursing care to the patient. These are the potential health problem in COVID-19 patient here. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान जो कि हमारा टॉपिक है यहाँ पर। नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर ए पेशेंट विद कोविड-19 इन्फेक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग नर्सिंग प्रोसेस स्टेप एयर। फर्स्ट, नर्सिंग असेसमेंट। मीन्स नर्सिंग केयर प्लान के अंदर जो हम नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप जैसे कि आप सभी जानते हो नर्सिंग असेसमेंट होता है। मीन्स यहाँ पर कोविड-19 पेशेंट का assessment of the patient suspected of COVID-19 should include first travel history here. Healthcare providers should obtain a detailed travel history for patient being evaluated with fever and acute respiratory illness. Means जो पेशेंट है उसका हम ट्रैवल हिस्ट्री सबसे पहले कलेक्ट करेंगे कि उसने कहाँ कहाँ यात्रा की है। मीन्स आफ्टर seeing the fever and respiratory illness, means जो कोविड-19 मेनली जो कम्युनिकेट हुआ है थ्रू वेरियस ट्रैवलिंग कंट्रीज। नेक्स्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन ईयर पेशेंट हु हैज फीवर, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ assessing on the time of assessment in spacing having problem of or having the symptoms of COVID-19 here. Next, based on the assessment data, the major nursing diagnosis for a patient with COVID-19 means after the assessment, we write here the nursing diagnosis for this care plan. Means after assessment and gather the baseline information to the patient. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान। ईयर फर्स्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस infection related to failure to avoid pathogens secondary to exposure to COVID-19 means patient getting infection related to COVID-19 exposure or
failure to avoid pathogens. Your goal is to prevent the spread of infection. Their intervention and specific rationale for this means why we use this here. First intervention, monitor the patient temperature. This rationale for this, the infection usually begin with the high temperature. Is a patient having high temperature, that means this is significant for the infection present in patient. Next, monitor the respiratory rate of the patient here. Shortness of breath here. Shortness of breath is another common symptoms of COVID-19. Next, assess the amount and characteristics of sputum. To identify sputum here. Next, review the patient and sign symptom of infection here. Intervention rationals, discuss preventive methods to reduce the risk of infection. Next, monitor laboratory studies for monitor infection process. Next, maintain infection control precautions to control infection. Next, administer prescribed medication and monitor the effect for therapeutic purpose. Means after providing these interventions here, uh, we evaluate the patient for achieving the goal or not here patient is able to prevent the spread of infection. Here goal is achieved by after फॉलोइंग इंटरवेंशन प्रोसेस. तो ये हमारा फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान यहाँ पर कोविड-19 का जो डायग्नोसिस का इन्फेक्शन रिलेटेड टू द फेलियर टू अवॉइड पैथोजन सेकेंडरी टू एक्सपोजर टू कोविड-19 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है. नेक्स्ट आप यहाँ से ये नोट्स लिख सकते हो फॉर एग्जामिनेशन पर्पज प्रिपरेशन और फॉर फाइल वर्क हेयर. नेक्स्ट देखते हैं नंबर सेकंड डायग्नोसिस नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड फॉर कोविड-19. Here diagnosis, deficient knowledge related to unfamiliarity with disease transmission information. Means patient having no knowledge or little bit knowledge about the COVID-19 transmission and treatment process and their goal or expected outcome. Clients will learn more about the disease and management. Here next, intervention and specific rationale. Here assess patient existing knowledge level. मीन्स जो पेशेंट का नॉलेज लेवल है उसके बारे में असेस करना है पेशेंट को कितना नॉलेज है. या रेशनलाइज टू नो द पेशेंट्स नॉलेज अबाउट द डिजीज़. नेक्स्ट, एजुकेट पेशेंट एंड एसओ मीन्स सिग्निफिकेंट अदर्स. मीन्स जो पेशेंट के साथ फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड्स है, नेबर है, पीर है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी है, तो उसको अपन को एजुकेट करना है रिलेटेड टू कोविड-19 डिजीज प्रोसेस ट्रांसमिशन ट्रीटमेंट एयर रेशनलिज टू इम्प्रूव नॉलेज लेवल. नेक्स्ट, provide information on disease transmission, diagnostic testing, disease process, complication and protection from the virus. Means here we give thoroughly knowledge to the patient about the COVID-19. He rationally educate about the disease and treatment process, help in prevention of disease and control on COVID-19 spread. Here, after giving these interventions, we evaluate the patient for achieving the goal or not. Here, patient is able to learn more about the disease and its management. Means now our goal is achieved and patient having knowledge about the COVID-19 and ट्रीटमेंट प्रोसेस. तो ये हमारा सेकंड नर्सिंग केयर प्लान कंप्लीट हो गया है यहाँ पर. और आप यहाँ नोट्स ले सकते हो इसके.
Next, nursing care plan number third. Nursing diagnosis here, hyperthermia related to disease process, here expected uh, goal and expected outcome to improve body temperature, air intervention and rationals. First intervention for this here, assess the sign of hyperthermia. Rationally assessment for hyperthermia. Sign and symptom including flushes, face weakness, rash, respiratory distress, tachycardia, malaise, headache and irritability. These are the sign of hyperthermia. Next, assess sign of dehydration as result of hyperthermia. Here, rationalize sign of dehydration including thirst, furrows, tongues, dry lips, dry oral membrane, poor skin turgor, decrease urine output, increase concentration of the urine, and big fast pulse. Here, next, monitor the patient heart rate and blood pressure. Here, rationalize heart rate and BP increase as hyperthermia progress. Hyperthermia में heart rate and BP बढ़ जाता है. Next, loosen or remove excess clothing and covering air. Here rationalize exposing skin, room air, decrease heat and increase evaporative cooling. Next, intervention देखते हैं. Provide hypothermia blanket and cooling blanket where necessary. Here rational, इसका रेशनल थोड़ा अप एंड डाउन हो गया तो इसका रेशनल एयर. use cooling blankets that circulate water when the body temperature is needed to cool quickly. Next intervention, provide tepid bath or sponge bath to the patient. Here rational, for tepid bath, a tepid sponge bath is known pharmacological measure to allow evaporative cooling. Next, apply ice pack to the patient. Here rational is an effective way of cooling the core body temperature. Here next, adjust and monitor environmental factor like room temperature and wet linen as indicated. Means here rational is to regulate the patient temperature. Next, educate patient, encourage patient to fluid intake here. Here rational is if the client is alert and enough to swallow, provide cool liquid, help lower the body temperature. Next, start intravenous normal saline to patient. Here rational, intravenous normal saline solution replenish the fluid loss. नेक्स्ट देखते हैं एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक मेडिकेशन हेयर. रेशनल एंटीबायोटिक ड्रग्स यूज टू ट्रीट हाइपरथर्मिया. means improved body temperature here normal level. means after providing these interventions we control patients hyperthermia easily. तो ये हमारा यहाँ पर थर्ड नर्सिंग केयर प्लान कंप्लीट हुआ है. इसका डायग्नोसिस है हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस. इसको यहाँ से आप एक बार फिर नोट्स ले सकते हो. Next, number 4 to nursing diagnosis here. Impaired breathing pattern related to shortness of breath. means here breathing pattern is abnormal और यहाँ पर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है. इसका यहाँ गोल और एक्सपेक्ट आउटकम होगा टू रिस्टोर ब्रीथिंग पैटर्न बैक टू नॉर्मल कंडीशन. Here intervention and rational assist the patient with activities of daily living.
Rationale is to provide and support the patient. Next, monitor respiratory rate and depth to air. Collect baseline data. Next, place patient in a same Fowler's position. Rationale is to facilitate lung expansion. Next, air. Encourage patient to deep breathing and coughing exercises. Air. To strengthen the lungs and mobilize secretions. Next, maintain respiratory isolation to prevent infection. Next, keep tissue at the patient bedside. Here, for coughing purpose. Next, dispose secretions properly to prevent infection. Next, instruct patient to cover mouth when coughing or sneezing. Here, rationale is to prevent droplet transmission. Next, use mask and advise those entering the room to wear mask. Here, rationale is to prevent spread of COVID-19. Perform suctioning as needed. Means suctioning clear clear the airway mechanically. Next, perform chest physiotherapy. Means here rationale for this chest physiotherapy to mobilize secretions. Next, administer nebulization. Nebulization facilitate liquefaction and removal of the secretion. Next, oxygen treatment as needed to meet the oxygen demand. Next, monitor pulse oximetry. Here, monitor the patient O2 saturation because the respiratory compromise the result of hypoxia. Next, administration medication as indicated for treatment purpose or as use the therapeutic regimens. तो ये हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर 4 तो कंप्लीट हुआ है. यहाँ पर देखते हैं इवेल्यूशन फॉर आफ्टर गिविंग various intervention to patient. Now evaluation is restore normal breathing pattern of the patient. तो ये हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस 4 जो हमने कोविड-19 का बनाया है. impaired breathing pattern related to shortness of breath. तो आप यहाँ से नोट्स कलेक्ट कर सकते हो थ्रू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 5 नर्सिंग डायग्नोसिस. Here, 5th nursing diagnosis. Here, anxiety related to unknown etiology of disease means goal and expected outcome to reduce anxiety of the patient. Intervention and rational. First intervention, assess sign and symptom of anxiety. Rational for baseline data, provide calm and reassuring environment. Means here establish trust and reduce anxiety. Next, decrease environmental stimulations means those cause or increase the rate of anxiety. Here rational is reduce anxiety risk. Next, explain all tests and procedure to the patient using clear and simple explanation. Here rational is to improve knowledge of the client. Next, help the patient identify risk factor that increase anxiety. Here rational is to reduce the risk of anxiety. Next, teach stress reduction and relaxation technique. Here rational is relaxation techniques help in managing anxiety. Next, intervention provide spiritual support and counseling may help restore some feeling of control. Here, this diagnosis interventions complete. Next, देखते हैं evaluation for this diagnosis. Now, anxiety reduce and patient appear relaxed and we achieve your goal of this diagnosis. तो देखते हैं यहाँ पर हम एक बार फिर इसको आप यहाँ से नोट्स अपने ले सकते हो. हम यहाँ धीरे धीरे आपको यहाँ इसको दिखा रहे हैं.
फ्रेंड्स, ये हमारा नर्सिंग केयर प्लान ऑन कोविड-19 यहाँ कंप्लीट हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद अवर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग पहले प्रिपरेशन फॉर nursing competition examination and press bell icon also. Thank you.